So yeah, hello everyone. This is Shubham from Fires team. Welcomes you to our webinar on investing in US stocks with the NYSE Bankless ETF and Fund of Funds scheme in association with Mirae Asset Global Investment India. We hope you all are keeping yourself safe and healthy through this challenging time. With that, let's get started. As if you aware that recently we have seen a shift in investment that investors are looking for some kind of a diversification in their portfolio. Either they are investing in top performing economies or uh, other avenues available to them to invest in other markets like US markets and all. And we have the various investment avenues as well. Like we have the options like ETFs, the safest and the cost effective option. To know more about it and the US stock ETF saga, let's get tuned to Karan. Karan is will take you through the ETF and the NYC Fang Plus scheme. So yeah, Karan. Thank you, Shubham, and I welcome everyone who has joined this webinar today. So, good evening to everyone, and thanks for giving us from Mirai Asset this opportunity to actually talk about this product which has been launched recently. We are seeing good interest from the investors, and we are very happy to see such a product being launched in the India. As Shubham mentioned, this is the first of its kind product which we have tried to launch. And okay, some people are saying that I should speak in Hindi, so मैं हिंदी में भी बात करूंगा. So today आज का एजेंडा जो है वो है कि हम ETFs के बारे में जानें. What are ETFs? How do ETFs work? Why we are suddenly talking about ETFs? And also हम जाने कि ये जो FANG ETF हमने लॉन्च किया है एंड फंड ऑफ फंड उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. एंड we will also like to know that how basically this product is beneficial for the portfolio of all the investors. So I already see कि काफी questions आ रहे हैं chat box में. uh, I think we can take the questions at the end. I think उससे ये conversation जो है वो काफी streamlined रहेगा. So we will talk about what is the agenda for today, and then whatever are your questions we can take those questions at the end. So I hope that is fine with everyone. So fine. So without wasting any time, I will start my presentation. And as you can see, the topic is the future of investing, which is ETF. I hope the presentation is visible to all of you. It is in full screen. So सबसे पहले, we will find out what exactly is an exchange traded fund. What is, an ETF? Why people are talking about an ETF? So just to highlight, आपको काफी लोगों को ये information पहले से भी पता होगा कि what is an ETF, but just to get everybody on the same page, an ETF is basically a product which I would say is a little superior sort of a product. Okay, it is a little superior product, and which is why आपने देखा होगा कि globally ETF जो product है उसका जो growth हुआ है in the last decade, it has been phenomenal. बहुत जल्दी ये product is actually managing a AUM which is upwards of about 7 trillion US dollars. Now this is the fastest growth any sort of a financial product which has seen in a very short span of time. And why we are saying that ETF is a more of a superior product, because इसमें क्या है कि this product actually combines the advantages which we get from other products like a stock or other products like a mutual fund, and we do not get the disadvantage or some of the drawbacks, I would say, which we probably get in a stock and a mutual fund. So कहने का मतलब है कि like in a stock का सबसे ज्यादा एडवांटेज यही है कि आप उसको फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं.
You can freely buy and sell a stock on the exchange. And that is the best point about a stock ki, anytime during the trading hours you can freely trade the any number of shares. तो चाहे वो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, इट डजेंट मैटर कि वो कितने आपने क्वांटिटी आपने शेयर्स का ट्रेड करना है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टॉक, एंड विच इज व्हाट यू गेट इन एन ईटीएफ एज वेल, कि आप ईटीएफ भी एक स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं. एक्सचेंज पे जाके आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं. अगर आपको एक यूनिट खरीदना है, सो समथिंग लाइक अ फैंग ईटीएफ जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो उसका प्राइस अभी इट इज अराउंड 47 रुपीज. तो 47 रुपीज में आपको अंडरलाइंग 10 कंपनीज जो कि सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है एक यूनिट के थ्रू, विच इज ओनली 47 रुपीज. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ एन ईटीएफ की जैसे कि स्टॉक एक आपको आप एनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप खरीद सकते हैं ऑन द एक्सचेंज. सिमिलरली आप ईटीएफ को में भी वो आपको एडवांटेज मिलता है. म्यूचुअल फंड का हमने देखा है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली गिव्स यू डाइवर्सिफिकेशन. A stock only gives you a certain participation into a single business, whereas in mutual fund you actually get participation into an underlying portfolio. That means different businesses, different companies, different businesses, you're getting participation through one product. Similarly, that advantage also you get in ETF. तो ईटीएफ में भी आपको एक म्यूचुअल फंड की तरह यू गेट एन एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ पोर्टफोलियो एंड नॉट अ सिंगल बिजनेस. आपको एक सिंगल बिजनेस नहीं मिल रहा, आपको एक पोर्टफोलियो मिल रहा है, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो जिसमें कि काफी सारे बिजनेसेस हैं. So that again makes this product just like a mutual fund, जहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है, आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो रहा है. सो बिकॉज हमने देखा है कि स्टॉक्स में आपको एक तरह का वॉलिटिलिटी भी मिलता है, बिकॉज अ सिंगल बिजनेस उसमें आपको ज्यादा वॉलिटिलिटी मिलेगा एज कंपेयर टू अ पोर्टफोलियो जिसमें कि आपके वेरियस नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं. So that is why an ETF product has actually gained the amount of traction, gained the amount of interest. And एक ETF is a very simple product also, very low cost in nature, because an ETF, the job of an ETF is basically to replicate an index. तो आपने जैसे अभी देखा होगा कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स पे ETF भी अवेलेबल है. सिमिलरली जो भी अगर देर आर एनी नंबर ऑफ इंडेक्सेस ग्लोबली देखा जाए, तो देर आर एक्चुअली मोर नंबर ऑफ इंडेक्सेस देन देर आर स्टॉक्स. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर एक्चुअली मोर देन द नंबर ऑफ स्टॉक्स. इंडिया में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एनएससी और बीएससी हैं जो कि इंडेक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट ग्लोबली देर आर प्राइवेट companies also which are allowed to introduce index. And because there are so many number of companies which have various kinds of indexes, उन indexes पे ETFs भी available हैं. So as long as आपके there is a publicly available index, उस index पे ETF manufacture हो सकता है. And how an ETF is a very low cost profile, a low cost product, because an ETF's job is to only replicate the index. इसमें कोई फंड मैनेजमेंट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है. जो इंडेक्स का अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है वही ईटीएफ का अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है और उसी को वो रेप्लिकेट करता रहेगा. Whenever there is any rebalancing which happens in the index, similarly the rebalancing will happen in the ETF as well. So that is what an ETF product is. I thought we will start with the basics where we are touching upon कि how ETF, आपने जैसे समझा कि how ETF is actually combining the advantages. It is combining the advantages of a stock and a mutual fund and not getting the drawbacks of these two products. Also, ETF एक बहुत ही low cost product है because it only replicates the index. That is the primary job of an ETF. So why now we will move ahead and after knowing ki ETFs, what exactly are ETFs? Now we will get to the why. That why we are talking about ETFs. Why suddenly there is more and more
awareness and more conversations which are happening around ETFs in India specifically. तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले जो ETFs की बात हुई है, that has happened in the large cap segment. तो लार्ज कैप सेगमेंट आपको पता है कि that is the top 100 stocks, the top 100 stocks which is Nifty 50 and Nifty next 50. So this is a segment जहाँ की देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, और पास्ट में देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स हैव जनरेटेड अ गुड अल्फा ओवर द बेंचमार्क. तो बेंचमार्क हमेशा से जो कि लार्ज कैप फंड्स के लिए बेंचमार्क हैज ऑलवेज बिन निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट. सो इट इज ऑलवेज सीन कि पहले जो म्यूचुअल फंड्स थे उनको दे हैड मोर फ्लेक्सिबिलिटी. तो large cap funds could actually have a certain bit of large cap exposure, but they could also take mid cap exposure, they could also take some small cap exposure also if they wish to. But ये सारी चीजें change हो गई 2018 के बाद, after the SEBI regulation which has come out, which has regulated the mutual fund segment. इस regulation के बाद now एक fund manager के पास the limit has been set that in a large cap product you can only take 80%, you have to take 80% exposure into the large cap segment, and you can only take 20% exposure to the rest of the segment. So now, if you compare the performance of a large cap fund vis-a-vis the benchmark, अब क्या हो रहा है कि large cap funds का performance benchmark के अगर आप comparison में करें तो बेहतर नहीं है. मतलब कि वो जो अल्फा एक लार्ज कैप फंड जनरेट कर रहा था ओवर द बेंचमार्क, जिसकी वजह से एक जो एक्टिव फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट विच एन इन्वेस्टर इज पेइंग in case you are investing into an active fund, that you are paying for that research, you are paying for that portfolio, and you are paying to actually get some bit of alpha over the benchmark. So that is getting harder to achieve with the coming times, and that data has basically instigated or sort of pushed the investor to actually explore कि हम ETF या benchmark में ही क्यों ना invest करें, राइट. उसी की वजह से ये ETF जो प्रोडक्ट है इसके बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस आने लगा है इन दी मार्केट्स, एंड दिस हैज टिपिकली स्टार्टेड टू हैपन जब से इट हैज स्टार्टेड विद द लार्ज कैप सेगमेंट where the alpha has been shrinking. So that is what we have shown in this slide also. You can see that पिछले डेकेड में जो 2001 से 2010 का जो डेकेड था, इसका हमने सारे लार्ज कैप फंड्स का जो अल्फा जनरेट किया है, वी हैव टेकन 28 लार्ज कैप फंड्स रेगुलर ग्रोथ प्लान, और उन्होंने जो एवरेज अल्फा जनरेट किया है ये सारे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, और उसका फिर हमने पूरे डेकेड का एवरेज निकाला है कि अल्फा वाज जनरेटेड इन द ट्यून ऑफ अबाउट 6.6%. So that is a healthy alpha which has been generated by the mutual funds, the large cap mutual funds. But we are seeing that in this decade, the last decade, 2011 and 2020, now this alpha is getting harder to generate, especially after 2018, जब से ये SEBI का regulation आया है कि now it is, the universe is very much defined for each and every fund, and now you can see that the alpha is actually become negative. राइट. तो ये डेटा पॉइंट की वजह से नाउ पीपल आर एक्सप्लोरिंग कि हम निफ्टी 50 जो बेंचमार्क है उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. और आप अगर बेंचमार्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज थ्रू ETFs, राइट. दैट यू इन्वेस्ट इनटू ETFs एंड यू गेट द बेंचमार्क इंडेक्स, द बेंचमार्क रिटर्न, which is actually better than a lot of the majority of the other funds where we are paying actually extra cost. So सिमिलरली इस स्लाइड में भी हमने काफी एक आर्ग्यूमेंट है कि लाइक इन मेरा एसेट ऑल्सो, हमारे जो फंड हाउस है उस हमारे पास भी लार्ज कैप फंड है, एक्टिव म्यूचुअल फंड है, एंड हमारा लार्ज कैप फंड फॉर्चुनेटली हैज बीन आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, राइट. Our large cap fund has always been in the quartile 1,
right? So argument is that what if you are invested into a large cap, the quartile one large cap fund, which is actually the top performing large cap fund. तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने जो टॉप क्वार्टाइल लार्ज कैप फंड्स थे, सिर्फ उनका अल्फा जनरेशन हमने देखा कि उसका क्या पैटर्न है। और लास्ट डेकेड में आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफी हेल्दी अल्फा जनरेट किया, but that alpha also for the top, only the top quartile large cap funds, that alpha has also shrunk. And especially 2018 में भी अभी आप देख रहे हैं कि काफी कम हो गया है वो अल्फा जनरेशन as compared to how it was earlier, right? So और एक और चीज है कि it is very difficult to predict कि कौन सा फंड है जो कि consistently बेंचमार्क को बीट करता रहेगा, because at any given instance या at any given point of time, जैसे अगर हम आज चेक करते हैं तो there could be, let's say 3 funds or 5 funds which are outperforming the benchmark, which is Nifty 50. But if you look, let's say 3 years from now or 5 years from now, so the chances are that, the same 3 funds or 5 funds would not be there, but some other funds would be there, right? So consistently also being in the quartile one is also something which is very hard to predict today. अगर आप आज की लिस्ट देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप 3 साल के बाद वही फंड्स रहेंगे टॉप क्वार्टाइल में, इट इज वेरी हार्ड टू से, बिकॉज फंड्स आल्सो हैव more of a cyclical performance. They also suit some market cycles. It depends on the fund manager's strategy, what strategy he's adopting as per the market cycle. So that is, this is the trigger point actually which the industry has seen कि इस trigger की वजह से more and more people have now started looking at the benchmark itself, benchmark investing, right? Which is called कि आप index में invest करें, और index में invest करने के लिए the best route is through the ETF. So these are the advantages of ETF as we discussed till now कि they are low cost products. You can see कि एक ETF और एक म्यूचुअल फंड में, जिसमें दोनों में आपको एक तरह का पोर्टफोलियो मिल रहा है सिमिलर, if you see a Nifty 50 ETF or if you see a large cap fund, lot, there could be, about 80% would be, the portfolio would be the same, but the expense ratios could be very different. So the expense ratio, for if I say the average expense ratio for the large cap ETFs is about 1.15%. But if you see the mutual funds, वहाँ पे expense ratio अगर आप देखेंगे तो average expense ratio can be as high as about 2.2% regular plan. Even in the direct plan भी अगर आप देखें तो it will be north of 1%. So ये जो cost में difference है, that ultimately is coming out of the performance of the fund itself. So वो performance में ही आपको देखने को मिलता है कि ETFs as it is, they are, the benchmark is getting more and more efficient. ये जो efficiency of markets हैं, ये globally भी देखी गई हैं, और ये धीरे धीरे इंडिया में भी in the large cap segment we are seeing that the markets are getting efficient. इसका मतलब है कि जो कलेक्टिवली जो मार्केट डिसाइड कर रहा है लार्ज कैप, खासकर लार्ज कैप सेगमेंट में, दैट इज गेटिंग हार्डर टू बीट बाय एनी इंडिविजुअल, राइट? सो दैट टिपिकली हैपेंस, ये ग्लोबली भी ये फिनोमेना हुआ है, एंड इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि इट इज स्टार्टिंग टू हैपन दैट द markets itself are getting efficient in the, especially in the large cap segment right now in India. बिकॉज लार्ज कैप सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है राइट नाउ इन इंडिया विच इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, जहाँ पे कि जो ये स्टॉक्स हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाती हैं, राइट? एवरी वन इज एबल टू फाइंड द सेम रिसर्च रिपोर्ट्स, जो कि एक फंड मैनेजर के पास भी शायद वो भी सेम ही रिसर्च रिपोर्ट फॉलो कर रहे हों. तो द इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्टॉक्स आर in abundance because of internet, because of technology. आप बहुत easily इन companies के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं, and companies are also very transparent. बहुत ज़्यादा disclosure है, and these companies are following very high standards of disclosure. तो इसमें they completely follow transparency. इसमें कोई कोई डेटा का वो नहीं है कि they could do some sort of
any sort of manipulation or any sort of coverings. They whatever is there, it is for everybody to know, and it is very easy to sort of judge for yourself कि ये companies का क्या performance है. तो उसी की वजह से ये लार्ज कैप सेगमेंट में देखा जा रहा है कि मार्केट्स आर गेटिंग एफिशिएंट, वेयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स इटसेल्फ, बिकॉज इंडेक्स सारा मार्केट कैप पे बेस्ड है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे बेस्ड है. जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ते जाता है कंपनीज का, जहां जहां पे इसका मतलब बाइंग हो रही है जिस स्टॉक्स में, उसका वेटेज भी पोर्टफोलियो में बढ़ते रहता है. और वैसे ही जो कंपनीज है जिनका मार्केट कैप घट रहा है, इसका मतलब उनका वेटेज भी आपके पोर्टफोलियो में घट रहा है. और सिमिलरली इंडेक्स में भी वैसा ही होता है. सो इट इज अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट विच इज हैपनिंग इन द इंडेक्स, विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द मार्केट सेंटिमेंट कह सकते हैं, या मार्केट बाइंग एंड सेलिंग कह सकते हैं. द लिक्विडिटी यू कैन सी कि ETFs में, बिकॉज अभी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, सो देर इज इनफ नंबर ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो. आप कभी भी एक्सचेंज पे जाए तो आप इजिली ETFs को बाय और सेल कर सकते हैं. एंड इसमें एक फिनोमेना है विच इज कॉल्ड मार्केट मेकिंग. सो वी हैव मार्केट मेकर्स जो कि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि कभी भी मार्केट में लिक्विडिटी का इशू ना हो. एंड ऑब्वियसली ETF में बहुत ट्रांसपेरेंसी रहता है, बिकॉज आप रियल टाइम अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, पोर्टफोलियो मूवमेंट देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स क्या मूवमेंट हो रहा है. इनफैक्ट ये एक ऐसा फीचर है ETF का जो कि आपको अलाउ करता है कि अगर कोई मार्केट में सडनली कोई डिप आता है या कोई करेक्शन आता है, तो आप उसका फायदा ले सके. हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट में करेक्शन आया है 3 से 4%, बट जब क्लोजिंग होता है मार्केट का, तो वो शायद वो डिप पे नहीं होता है, वो फिर से मार्केट रिकवर हो जाता है. एंड देन अगर आपको डे एंड प्राइस मिल रहा है जैसे कि आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है, तो आपको वो डिप जो था, जो मार्केट के मार्केट आवर्स के बीच में जो डिप आया था, वो एडवांटेज आप नहीं ले पाए, बिकॉज आपको मार्केट का डे एंड का NAV मिला, डे एंड का प्राइस मिला. बट ETF में, बिकॉज आप रियल टाइम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही अगर आपको लगता है कि मार्केट काफी ज्यादा फॉल किया है, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट डिप, एंड यू कैन एक्चुअली आप इंट्राडे भी, मतलब लोग इसमें काफी रिटर्न अर्न कर सकते हैं. एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कि इट रिड्यूसेस द नॉन मार्केट रिस्क. इसमें आपको सिर्फ इक्विटी प्रोडक्ट में, जैसे कि कहते हैं कि सिर्फ इक्विटी प्रोडक्ट्स में मार्केट रिस्क है, that is the only risk which is there in the equity products. Other than that, जैसे fund manager risk हो गया, AMC risk हो गया, fund management style, their strategy, those things आपको उसमें नहीं जाना पड़ता. बिकॉज अगर आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है आपको, तो आपको काफी चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड, अगर आप लार्ज कैप सेगमेंट में देख रहे हैं, तो लार्ज कैप सेगमेंट्स में भी आपको पता है कि देयर आर अबाउट 25-30 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स. तो उसमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए. द टिपिकल वे वुड बी टू स्टडी दैट कि जो फंड मैनेजर है उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो वो काफी एक एक्सरसाइज है, काफी ज्यादा उसमें रिसर्च जाता है. एक और उसमें बेहतर मेथड है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका इट रिड्यूसेस द नॉन मार्केट रिस्क. और ETFs को हमने देखा है कि क्लाइंट्स जो है वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज के लिए यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 जो पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कि हमने देखा होगा कि ज्यादातर हम लार्ज कैप स्टॉक्स को अपना कोर पोर्टफोलियो बनाते हैं, और जो थोड़े जो हम टैक्टिकल कॉल्स लेते हैं वो हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स में लेते हैं. तो जो कोर पोर्टफोलियो है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो आपने बाय एंड होल्ड रखे हैं, वो आप थ्रू ETFs ले सकते हैं, राइट. और बिकॉज लो कॉस्ट है, तो उसमें आपको कॉस्ट कंपाउंडिंग का भी फायदा है, क्योंकि अगर आप एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी कॉस्ट भी कंपाउंड होके बढ़ती जाती है. तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि जो आप लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आप ETF के थ्रू लो कॉस्ट पार्टिसिपेशन ले इन द लार्ज कैप सेगमेंट, एंड देन यू प्ले अराउंड विद द टैक्टिकल कॉल्स, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप्स हो, चाहे वो सेक्टर ETFs हो, चाहे वो इंटरनेशनल ETFs हो. That is, those are all the other segments which you can take investments into.
बट एंड सिमिलरली ईटीएफ्स को सैटेलाइट स्ट्रेटजी में भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन टेक सेक्टर कॉल्स, यू कैन टेक स्पेसिफिक मार्केट segment call, you can take foreign exposure, you can take commodity exposure, all that is possible through ETFs itself. तो एक complete portfolio strategy आप बना सकते हैं with ETFs, because ETF में एक आपको फायदा है कि कोई ओवरलैप नहीं है। जो कि ये इंडेक्सेस हैं ये बहुत ही डिफाइंड हैं। अगर लार्ज कैप इंडेक्स है तो निफ्टी 50 मतलब सिर्फ टॉप 50 स्टॉक्स हैं। अगर मिड कैप है तो सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स हैं। अगर उसमें कोई सेक्टर इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। सो उसमें कोई ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं है, कोई वेगनेस नहीं है, बहुत ही क्लियर पोर्टफोलियोज हैं। अगर फॉरेन का कोई ईटीएफ है तो सिर्फ फॉरेन स्टॉक्स हैं। सो ऑल दिस मेक्स मेकिंग योर पोर्टफोलियो, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम श्योर कि आप सब अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ईटीएफ्स एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। So now coming to basically our product, which is FANG plus ETF. It's called Mirai Asset NYSE FANG plus ETF and Fund of Fund. Um, इस प्रोडक्ट के लॉन्च करने से पहले हमने वी हैड द सेम क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट व्हाई ग्लोबल इन्वेस्टिंग, व्हाई शुड वी लुक एट ग्लोबल इन्वेस्टिंग एज इंडियन इन्वेस्टर्स। क्योंकि हमने देखा है कि प्रिडोमिनेंटली हम जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम इंडियन मार्केट्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। हमें शुरू से ही हमें वो बिलीफ भी है और हमें बताया भी गया है कि जो इंडिया स्टोरी है दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी, राइट। एंड जो हमारे जो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी डेमोग्राफी है, हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है, वो हमारे फेवर में है, एंड दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, एंड विच इज वाई हमारे मार्केट्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा है और मिलते भी आया है। So that is why we are heavily invested into our own markets. But the question which which we thought कि ऐसे ज़्यादा products नहीं हैं, especially ETF एक ऐसा product है जो कि low cost exposure देता है अपने underlying portfolio में. So why not explore global investing? And that is what I want to start this discussion with, कि why global investing? So सबसे पहला इसका आंसर जो आपके भी दिमाग में आया होगा, and which you can also think, is that some of the things which we are using in our day-to-day lives, which actually are not related to just us, कि ये नहीं कि हम सिर्फ एक कंट्री में ही ये यूज कर रहे हैं, ये हर जगह अराउंड द वर्ल्ड, these are some of the mega trends which are happening around the world, whether it is e-commerce, internet surfing, streaming, gaming, social media, electric vehicles, cloud computing, industrial automation. They have completely taken over or transformed the respective industries or the respective businesses, or our own lifestyle, how we are actually जो हमारा पहला बिहेवियर था और जो आज का बिहेवियर है वो काफी चेंज हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम जैसे पहले शॉपिंग करते थे, अब वो ई कॉमर्स ने वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम जैसे अपने आप को एंटरटेन करते थे, वो अभी स्ट्रीमिंग कंपनीज और गेमिंग कंपनीज ने वो काफी हद तक हमें दैट एंटरटेनमेंट इज कम्प्लीटली चेंज्ड। हाउ वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। या फिर हम अपना जो डेटा कैसे स्टोरेज करते हैं, वो अब क्लाउड कंप्यूटिंग ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और उसकी सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी है, डेटा सेंटर्स हैं, बिकॉज देयर इज सो मच डेटा, डेटा इज द न्यू ऑयल। आपने सुना होगा कि इतना डेटा है हमारे कंपनीज के पास, और जो लार्ज कंपनीज हैं, एग्रीगेटर्स हैं, कि नाउ द डेटा इज हैज टू बी स्टोर्ड एंड हैज टू बी, मतलब उसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना है, तो दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर्स। And now the industrial automation is completely changing our manufacturing sector, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हमारे, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर आप ले ले, स्टील सेक्टर या माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, हर जगह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ज्यादा यूज हो रहा है। एंड नाउ द इवन द ऑटो सेक्टर is getting transformed by the electric vehicles. So these are all mega trends which are happening around the world,
और इन मेगा ट्रेंड्स का अगर आप देखें, अगर इनका फायदा उठाना है, so then we have to look at companies which are the leaders in these mega trends, right? And ये तभी हमने ये पोर्टफोलियो के बारे में हमने यू नो दैट इज द आइडिया बिहाइंड एक्चुअली क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट, कि ये जो ट्रेंड्स हैं, अगर हमने इन ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करना है और इनके लीडर्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ देखना ही पड़ेगा। हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग की मतलब यू नो वी हैव टू इन्वेस्ट ग्लोबली, क्योंकि इंडिया में रह के आप ये पूरे जो ये ट्रेंड्स हैं उनको अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई वी हैव लुक्ड एट द ग्लोबल मार्केट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर यू नो दीज कंपनीज जो इस पोर्टफोलियो में हैं, दे आर द लीडर्स इन दीज मेगा ट्रेंड्स जो इमर्जिंग थीम्स हैं। एंड बिकॉज इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं दे आर ओनली 3% of the global markets. If you actually see in the terms of market cap, um, they are quite small in terms of market cap. And also Indian markets, you know, always we have industries or we have sectors जहाँ पे हमें exposure मिलता है which are very traditional in nature, चाहे वो financial services हो, consumer हो, pharma है, and you know so on and so forth. But if you have to invest into emerging themes, then you have to look at MNCs which are present across the world and have their presence in India also. तो इसी ये एक इस आइडिया के सोच के हमने ये प्रोडक्ट को फॉर्म किया है। एंड अनदर थिंग जो आपको यू नो आई हाईलाइटेड अर्लियर ऑल्सो, कि सिर्फ इंडिया ही का ही परफॉर्मेंस सबसे बेहतर नहीं रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप देखें तो एवरी ईयर देयर इज अ डिफरेंट इकोनॉमी, डिफरेंट रीजन विच हैज परफॉर्म्ड। एंड नॉर्मली आप देखें तो इट इज यू नो इंडिया is also there 2012 2014, then has been USA, and then has been China, which have been the top performing regions or countries you can say in the world. So which is why कि हम इंडिया में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, so why not look at you know the US markets also, and the leaders in the US market in the trends you know which we saw earlier. एक और एडवांटेज है जो कि हमें मिलता है एज इंडियन इन्वेस्टर्स इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन यूएस डॉलर, कि हमने देखा है कि इन द लॉन्ग टर्म कि आईएनआर हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। उससे क्या होता है कि आपको एक ऑटोमेटिकली रिटर्न मिलता है विच इज एडेड टू योर एसेट रिटर्न, कि मतलब जो आपको एक इंडेक्स या जो बिजनेस एक रिटर्न दे रहा है उसके एडिशनल आपको एक रिटर्न मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। सो दिस इज सीन इन द लॉन्ग टर्म। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप करेंसी डिप्रिसिएशन के लिए ही इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट like right now you can see that the currency has actually appreciated in the last 6 months, बिकॉज क्या है कि अभी यूएस का इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है काफी ज्यादा, और द डिफरेंशियल बिटवीन द यूएस इन्फ्लेशन एंड इंडिया इन्फ्लेशन इज क्वाइट लेस, राइट? बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि द इन्फ्लेशन डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अ डेवलपिंग इकोनॉमी, बिकॉज हमारे लिए एक इन्फ्लेशन, हेल्दी इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज द यू नो दैट इज हाउ द सेंट्रल बैंक keeps you know the economy in balance, कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में वो एक बैलेंस रखते हैं, and we have to have some amount of inflation. And similarly but जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखा गया है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा कम हो, तो वो जब तक इन्फ्लेशन डिफरेंशियल रहेगा तब तक यू नो वी विल सी दैट कि करेंसी में भी आपको एक फायदा मिलता है इन द लॉन्ग टर्म। So this is the two products, you know, Mira Asset NYSE FANG Plus ETF and Fund of Fund. The portfolio, as you might be knowing, is the FANG stocks, which is Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, and the Tesla, Twitter, Nvidia, Alibaba, and Baidu. तो जैसे कि हमने देखा था जो मेगा ट्रेंड्स थे उनमें जो लीडर्स हैं, दीज आर द लीडर्स। फेसबुक, ट्विटर, दे आर द लीडर्स इन सोशल मीडिया। ई कॉमर्स में यू नो अमेजॉन, अलीबाबा, they are the leaders. Search engine, you know, internet surfing, you know, Google and Baidu, they are the leaders. Streaming services mein Netflix is, you know, the leaders in streaming service. And then, you know, smartphone manufacturing and innovation, which is Apple.
And then we have Tesla, which is the leaders in the electric vehicle segment, and Nvidia, which is as leaders in the computer graphics hardware and data center segment. So these are all, one portfolio which is actually, covering all the global innovation leaders. They have completely transformed our lives. I'm sure कि ये काफी companies आप हम रोज आप अपने जिंदगी में use करते हैं, and which is why this one portfolio is actually giving you focused exposure into all these 10 companies. So these 10 companies, if we see, they are the most innovative companies in the world. एक consultancy है, one of the largest consultancies in the world, which is BCG, Boston Consulting Group. They come out with a list of innovative companies in the world every year. हर साल ये most innovative companies का एक list निकालते हैं, in which 7 companies of our portfolio have been part of this list, which has actually come out in 2020. And 4 companies in this portfolio have been part of this list of most innovative companies in the world for the last 10 years. So कहने का मतलब है कि these 4 companies are, they're called serial innovators. क्योंकि ये हर साल, they are the most innovative companies. They've always been part of, that this list of, the top 50 innovative companies in the world. एंड क्यों ये कंपनी सबसे ज्यादा इनोवेटिव है? व्हाई हाउ कंपनीज आर इनोवेटिव इफ दे आर स्पेंडिंग अ लॉट इनटू द R&D, राइट? हमने देखा है कि इनोवेशन आप तभी पॉसिबल है, इनोवेशन मींस यू आर कंप्लीटली डिसरप्टिंग योर ओन सेल्फ एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर. आप एक प्रोडक्ट के साथ ही आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट वन प्रोडक्ट, यू आर कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग एंड कमिंग अप विद न्यूअर प्रोडक्ट्स as per the, the new demands and the new, you are actually making a new demand in the market. तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे हैं. एंड इफ यू सी दैट दीज कंपनीज, इनका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हाई स्पेंड है. तो इफ यू सी इस पोर्टफोलियो का जो R&D स्पेंड है, दैट इज इक्वलेंट टू आर इंडियन कंपनीज कंप्लीट रेवेन्यू. तो जितना इनका R&D एक्सपेंस रहा है 2018 में, यू कैन सी दीज आर ऑल फिगर्स इन बिलियन US डॉलर्स, उतना हमारे कंपनी का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करते हैं. दीज आर द लार्जेस्ट कंपनीज इन लिस्टेड इन इंडिया. SBI, ONGC, IOC, जितना इनका लार्ज रेवेन्यू होता है साल का, उतना ये R&D पे स्पेंड करते हैं, राइट? सो दिस इज अगेन हाईलाइट्स की why they are the most innovative companies, because of their high R&D spends. और एक और चीज है कि these companies, they maintain their top position in whichever industry they are present in by always looking out for newer opportunities. तो जितनी भी नई opportunities उनको मिलते हैं, in the sense कि अगर कोई opportunity in the sense कि कोई new company है which is a rival company or a company which is into a similar business, so they are always looking for acquisitions. So आप इधर इस slide में आप देख सकते हैं कि a single company has acquired how many number of companies till now. Like a company like Facebook has acquired 90 companies till now, and is also invested, heavily invested into companies. 43 companies they are invested in. So this is, again, because they want to maintain their leading position in, in their respective industry. So they always, are ahead of the curve. और वो कैसे करते हैं कि they always are looking out for acquisitions. Alphabet as a company has acquired 229 companies till now. Amazon has acquired 78 companies, and they are also invested into a large number of companies. So sometimes we also had this idea कि maybe 10 companies in a portfolio, शायद ये बहुत ज़्यादा concentrated portfolio है. But अगर आप देखें तो ये 10 companies नहीं है, these are actually close to about 800 to 900 companies, because of the number of companies they have acquired over the time, which is what has maintained their leading position. And one can see कि इनका acquisition and investments में कितना ज़्यादा spend है इस portfolio का.
So their total spend in acquisition and investment is about 176 billion US dollars, which is quite equivalent to the Reliance ka full, market cap. So this is only the spend on acquisitions and investments into other companies. So they are always looking out for opportunities and threats from the market. And see why we have selected this portfolio and this index also, why it is, of these 10 companies, because ये जो 10 companies हैं, they have obviously हमने देखा है कि they have changed our past, but similarly these are the same companies which are constantly reinventing themselves, innovating, and also getting into newer technologies which will shape our future. So they are the same companies which are getting into artificial intelligence, virtual reality, autonomous driving, electric vehicles, industrial automation, robotics, semiconductors. ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर हैं, और यही कंपनीज जिन्होंने अभी तक हमारा जो इकोसिस्टम हमारा डिसरप्ट किया है बाय ब्रिंगिंग इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज, they are the same companies because of their sheer might, their sheer size. They are actually heavily invested into bringing in newer technologies for the future also. Why we are saying that? If you get into company specific, अगर आप कंपनी स्पेसिफिक्स भी आप देखें तो एक एक कंपनी आप देखेंगे कि दे आर नॉट जस्ट डूइंग वन बिजनेस, दे आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस. They are having such diversified underlying businesses कि आप आप काफी surprised हो जाएंगे कि they are invested into such a varied sort of businesses which they have. So company like Alphabet, हमें पता है कि Alphabet का सबसे बड़ा जो underlying company है, which is Google, but it is not just into the, I mean obviously Google से ही सबसे ज्यादा इनको रेवेन्यू मिलता है in terms of the search engine uh, market share which they command, but also in the cloud computing they are one of the largest players. They have properties like the Google Maps, they have the operating system, they have the streaming services, they have hardware, so which is Pixel, Nest, Chromebook. Then they have a Google Venture, which is a VC. They are also working on electric vehicle. They are working on high speed internet connectivity through Google Fiber, and they are also working on various other projects which is related to human sciences, life sciences, increasing human age. तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वेरिड और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पे वन कंपनी इज वर्किंग, एंड नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन वन बिजनेस, राइट? Similarly, Tesla को देखें हम, Tesla is a company which is not just making electric vehicles, it is also making car batteries, it is making charging points, it is making solar panels. तो ये कंप्लीट एक इकोसिस्टम बना रही है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉर ऑटोनॉमस ड्राइविंग, which is going to disrupt the whole auto sector itself. Right now एक टेस्ला कार की अगर आप प्राइसिंग देखें, it is around 80,000 to 90,000 US dollars. They are trying to bring down that price to about 30,000 US dollars. And that will be possible very soon because आप देखेंगे कि Tesla is also planning to penetrate countries like India. आप देखेंगे कि within I think in next 2 years, in maybe next year or next to next year, you will see that Tesla cars would be available in Indian market as well. So काफी चीजें मतलब they are always reinventing and putting their hands into different businesses. Amazon is a clear example of that. They started as a company which was only into e-commerce. Actually they started as a company which was only delivering books, but then they got into e-commerce and now they are the leaders in e-commerce. But अगर आप last year का इनका annual report देखें, so their most profitable business was actually the cloud, the Amazon Web Services, which they have. So that is the cloud storage service which they provide, and that was the most profitable business, not the e-commerce business. So similarly, they are one of the leaders in cloud storage by Amazon Web Services. They also have streaming services. They have smart homes. They are also constantly reinventing themselves.
Alibaba obviously is like the largest player in the Chinese market. हमें पता है कि Amazon and Google इनको operate नहीं कर सकते ये Chinese market में, and China market is huge. So companies like Alibaba and Baidu, Alibaba is like the Amazon of China, and Baidu is like the Google of China. So Alibaba dominates the B2B and the B2C segment in China, and similarly Baidu also has the clear monopoly in the search engine and the streaming services also they have. Facebook also has completely reinvented themselves. आपको पता है कि they have acquired WhatsApp recently, then they acquired Instagram, and now they are working on connectivity, artificial intelligence, virtual reality. They are completely, now their next plan is to get into these newer technologies. Apple also is not just relying on smartphone manufacturing, but is completely moving to being a service company. So services like Apple Music, TV, Apple Gaming, यहाँ से इनको काफी ज्यादा रेवेन्यू आना शुरू हो गया है. So even the accessories, the accessories have become a large part of their revenue, which the Apple is generating. So they are completely reinventing themselves, constantly reinventing, and how they're, because of their sheer might, they can afford to do that because आप देख सकते हैं इनका combined market cap of these 10 companies is 7.7 trillion US dollars. Huge, huge market cap. It is, अगर आप ये country होती अगर ये 10 companies की, तो it would have been the third largest after United States and China in terms of their GDP, and if in terms of their revenue, their these 10 companies, their revenue is actually three times the Indian government's receivable for the last financial year. The amount of cash they have, 500 billion US dollars, it is equivalent to 85% of the total forex reserve held by RBI in 2020. And the net income of these 10 companies is exceeding the net income for all the companies which are listed on the Indian stock exchange. So just one can see the sheer size of these companies. These are the largest companies in the world, and which is why ये companies के पास वो potential है that they have the resources to actually keep reinventing and actually define our future also. Define the technologies, define the newer products which will actually capture our future. So that is the complete idea of this product. Key, these companies are part of your life today, and they are geared. They are very much geared, and they are very much, they have the potential to actually define our future also. So now just getting a little bit more specific to the index. The index is called NYSE FANG Plus Index, New York Stock Exchange FANG Plus Index. Equal weight index है, बहुत ही simple, 10 stocks and 10% weightage to each stock. Rebalancing happens every quarter. Is index is a complete representation of the high growth technology and internet media industry of basically of multinational companies, of consumer discretionary and technology companies, and these companies have to be listed on the US stock exchange. These one of the two of the criterias which they have mentioned is कि companies should have a minimum market cap of 5 billion US dollars and should have the daily trading volume of at least 50 million US dollars. So, they have a governance committee also, which is overlooking the process of selecting FANG stocks. So, जैसे कि निफ्टी 50 में आप देखते रहते हैं कि चेंज होते रहता है कि कोई स्टॉक अंदर is becoming a part of Nifty 50, some stocks are coming out of Nifty 50. FANG stocks also, they have a governance committee. जैसे कि हमारे NSE और BSE में भी एक गवर्नेंस कमेटी होती है जो ओवरलुक करती है ये प्रोसेस, वैसे ही ICE, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ NYSE, New York Stock Exchange, they also have a governance committee which ensures कि कौन से stocks इस portfolio में रहेंगे और अगर इसमें कोई rebalancing होगा तो. But from the day of inception, which is the index was came into inception in 2017. So तब से लेके अभी तक कोई change नहीं आया है इस portfolio में, and वही के वही stocks रहे हैं.
only the rebalancing has happened, that every quarter the rebalancing is done to maintain 10% weightage. And you can see the performance. The back tested result is available since November 2014, and you can see इसका कंपैरिजन हमने Nasdaq 100 के साथ किया है, S&P 500 के साथ किया है और Nifty 50 के साथ किया है. Why we have done this? Because Nasdaq 100 is also a tech index जिसमें कि सारे टेक स्टॉक्स आते हैं जो कि यूएस मार्केट्स में लिस्टेड हैं. S&P 500 is a very broad based index of the US market. जैसे कि हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं BSE 500 है, और Nifty 50 is the large cap stocks of the Indian market. So उसके साथ आप कंपैरिजन करें, अगर आप 1000 की हमने बेस वैल्यू लेके आपको ये ग्राफ दिखाया है कि हाउ दी FANG has outperformed all the rest of the Nasdaq and the S&P and the Nifty 50. In terms of returns also, you can see कि बहुत ज़्यादा outperformance है of FANG Plus index, which has been seen in the past. Recently, of course, आपने देखा है कि because of COVID and pandemic, the tech stocks have performed very well, especially these stocks. And उसकी वजह से बहुत ज़्यादा outperformance है of these stocks as compared to Nasdaq and the others. And in the long term also, you can see that these companies have performed very well. एंड अगर आप रिस्क टू रिटर्न रेशियो की भी बात करें, मतलब द अमाउंट ऑफ रिस्क यू हैव टू टेक टू जनरेट अ रिटर्न of 1%. So you can see that in FANG Plus index the risk to return ratio is also quite high. एवरेज रोलिंग रिटर्न ऑल्सो बड़ा ही फेयर मेजर होता है ये देखने के लिए कि एनी 5 year विंडो या एनी 3 year विंडो इफ यू टेक in the past, then you can see that क्या performance रहा है of FANG Plus index, of S&P, of Nasdaq and S&P 500. So one can see that any 5 year 3 year period, FANG has given close to about 35 to 36% return, which is very very good, and Nasdaq has given about 22 to 23% return, and S&P 500 has given about 15% return. Sorry. In terms of industry classification, जैसे मैंने आपको बताया, predominantly are internet and media stocks, and also entertainment, semiconductors, and technology, hardware, and automobiles. So these are the sub segments या sub sectors आप कह सकते हैं within the internet and media stocks. And the latest weightage, ये थोड़ा सा dated है data. This is as per March, but these percentages obviously keep changing within the quarter. तो within the quarter, whatever is the underlying stock movement, उसके हिसाब से weightages बढ़ती और कम होती जाती हैं. और but at the end of the quarter, weightages are set at 10% for the rebalancing. So that is what the product is all about. Just to sum it up, कि बड़ा ही simple product है. It is giving you focused and equal weighted exposure into the large, very innovative companies in the technology, internet, media sector. और ये ऐसी companies हैं which are not just present in one geography or one market. They are across the world. So they will they will do the disruption across the world. And this one product is giving you participation into all of them in a very low cost manner, because the ETF का अगर आप expense ratio देखें, it is only 0.33%. 0.33%, 33 basis points. And so it's very very low, the expense ratio. And इतने कम expense ratio में आपको basically इतना international exposure मिल रहा है, because we have seen कि investors in stocks में individually भी invest करते हैं through the LRS scheme, but वहाँ पे फिर there are a lot of charges which one has to incur as an individual, whether they are bank remittance charges, foreign currency conversion charges, broking charges, बहुत सारे उसमें charges. But because as an AMC, when we are buying in bulk, we have tied up with brokers, custodians. The cost to trade is comparatively very very low when अगर आप हमारे product में invest करते हैं.
And of course, we have seen that this portfolio has performed very well in the past also, and the future also. We predict that this portfolio is a very high growth portfolio. But of course, this will be a very high growth but highly volatile portfolio also. So ये चीज भी note करने वाली है कि this portfolio is consisting of companies which are the most traded companies in the world. आए दिन आप सुनते रहेंगे कि कोई ना कोई न्यूज आती रहती है इन स्टॉक्स के बारे में, तो इसलिए इनमें हाई वॉलिटिलिटी भी रहेगा, because these are the most traded stocks in the world. There's huge amount of money invested in them. So I would suggest कि please invest for the long term, and short term में there will be high amount of volatility which will be there in this sort of a portfolio. So with that, I will conclude my presentation. I think that is exactly the time which was given to me, 4 to 5. So if there are any questions, and I have seen कि काफी questions आए हैं, so I will like to take them one by one. Karan, first of all, we'll take you, I mean, attendees through the how they can invest in FANG ETF on FIRE's platform, and Sure. then we'll take. There are a few questions about taxation, with related to the scheme and about other equity ETF related questions as well. So yeah, Sure. Please go ahead. many are asking like, what's the process to invest in these ETFs? So I'll share my actually ETF. Mirae Asset Management recently launched two new FANG Plus funds. One is an exchange traded fund that tracks NISC FANG Plus, and others is a fund of fund. So the fund of fund invests 95% of its assets, I mean funds, into ETF. So basically, though both the products are exactly the similar. So I'll just share my screen if it's visible to you. Just I'm sure is it visible to you, right? Karan, is it visible to you? Yes, Shubham, it is visible. Yeah. So you just have to type here MFANG. That's the actually symbol available on NSE as well as an BSE. So if you click here, so it's actually traded with a high volume on an everyday single basis. Uh, if you see, it's listed on 14th May. So it's like just like a stock you buy for 1 unit, 2 units, and so on. So if I want to buy, so just like normal stock or options, you can just click here and then you can buy here. We have another platform as well. So uh, you can go over there. So on direct platform, if you go over here, so you just have to explore the fund first of all. So here you just select all and then go by FANG.
Actually, there are so many funds, so we are not able to find the exact one. Just a moment. Actually, it's a fund of fund, yeah. So you can find it here, Mirae Asset NYSE FANG plus ETF fund of fund. So you can start your SIPs from here. You can invest in lump sum amount as well. So you can, just like a normal SIPs you do on a systematic basis. So you can invest in on a monthly, quarterly, or let's say biannually basis. So yeah, with that I can hand over to Karan. So Karan can explain you about the taxation and other benefits of the schemes. Yeah, so taxation for all the foreign products, whichever invest into foreign equities, is debt taxation. So there will be debt taxation for this ETF and the fund of fund as well. Uh, uh, Viraj is asking how to trade in NISC FANG. So actually, it's like a just like a stock you normally buy and sell. So it's based upon your intraday call, or let's say based upon the swing trading, or let's say anything. But in the ETF, you will not see that kind of movement you see in the stock, because it has a index which has an underline. So, but still, it's your call anyway. So you can see Yeah, so I the. will just explain this, what happens, how we are basically enabling the trading which is happening on the exchange in the Indian markets. So as you understand that जो इसका underlying portfolio है इस product का, that is, US securities, and that is getting traded in the US trading hours, and not, during the Indian market hours. So Indian market hours mein, how we are facilitating and how we have basically started with the allotment price. First of all, the allotment price, the first price which we have arrived at is the index price, which is converted into the Indian rupee terms. So जो FANG plus index है, which is the index which is listed on the US markets, उसका आप levels देखेंगे, and this is on the 6th of May, that the as per the FANG plus index levels converted into the rupee terms, that is what has been taken as the ETF allotment price for the investors which were invested into the NFO. Now coming to कि trading कैसे हो रहा है, what is the price, what is the fair price to trade at. So as you know कि once, let's say, the trading session which is happening in the US, once that ends, and that ends at around 2 o'clock at night, as per the Indian trading as per the Indian time. So what we do is that we have a market maker which is supplying liquidity on the exchange, and he is quoting a price at a huge quantity. So that becomes like a, yeah, like a benchmark, or the sort of the correct price at which this portfolio should be trading at, because we want to ensure that कि ये जो पोर्टफोलियो, ये जो इस ETF में ट्रेडिंग हो रही है, वो सिर्फ सप्लाई डिमांड के बेसिस पे नहीं हो रही है. The correct trading should happen on this portfolio as per the underlying prices of the securities and the movement in those securities. So what we do is the market maker which is quoting a large number of quantity, he quotes it at a price which is, the price is based at the last NAV, last day NAV. मतलब अगर हम आज की बात कर रहे हैं, सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे जब मार्केट खुलता है, so we look at the price which is the previous day closing price, and as per that, what is the NAV which is found out. On top of that, then we see that what is the futures movement, because the futures also sort of give an indication कि जो अब next US market का जो trading session खुलेगा वो कैसा होगा. Because see, somewhere we are trading in between the two trading sessions of the US market. One is, that is what is happening. So we are only wanting to give you a price which should be the correct price, or the closest to the correct price when the market actually opens in the evening, right? So मार्केट मेकर क्या करता है, एक तो जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो लेता है, उसके ऊपर अगर जो फ्यूचर्स का मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज फ्यूचर्स we have Nasdaq 100 futures, we have FANG plus futures, they are getting traded 24 hours.
सो वो उनका मूवमेंट से आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर नैस्डैक 100 पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब शायद जो मार्केट खुलेगा कल यूएस में वो भी पॉजिटिव में ही खुलेगा. So as per that, that price also which we are quoting on the Indian exchange, the market maker what he is quoting, he will also factor in that percentage movement. Also, we are looking at any currency movement also. So day-to-day currency movements also affect the prices of the underlying securities, and that also we consider when we are quoting, when the market maker जो हमारा we have a market maker which is a group company, मेरा asset capital market. तो they ensure कि जो market में वो price quote कर रहे हैं, and they put a large quantity, so that kind of becomes like the base price. That is the mechanism by which we try to control, that we have a control on the ETF price, and the ETF price should not be dictated on the terms of purely supply and demand, but it actually should be determined as per the underlying portfolio, which is the movement of the underlying stocks. And then we try to give you a price on the exchange which is a prediction of the price, which it will be when the US markets open. So that I think explains कि ETF की प्राइस पे जो डिबेट है, या जो कि if you want to understand that how we are quoting and controlling the price, this is how we are controlling the price. Karan, Amit is asking what's the difference between fund of fund and ETF. The same scheme has been listed. Yeah. Yeah. So basically, the ETF is a very good option for people who have demat accounts. जैसे कि आप सबके पास demat account है FIRES के साथ. But if you don't have a demat account, so then you can buy it through a fund of fund. The fund of fund is, the structure is like a mutual fund, जहाँ पे आपको एक day end NAV मिलता है. आपको real time pricing नहीं मिलेगा FOF में. Because see, the fund of fund is basically investing into the ETF itself. अगर आप fund of fund का underlying portfolio देखेंगे तो that is of consisting of this FANG plus ETF itself. So the fund of fund is basically constructed for people, investors who do not have the demat account, who are not very trading friendly, and they want to do the SIP, STP, those options they prefer. Then you can do the fund of fund. ETF is for the investor, which obviously is very used to trading, and which would want to buy the ETF real time from the exchange, and would want to see real time movements in their product. So जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ETF और एक फंड में क्या फर्क होता है, that is the difference between the ETF product and the fund of fund. Devashri, please refer the scheme related document for tracking error related data. Right, Karan? Tracking error, see, I mean, the product is just launched. That the tracking, the ETF has got listed on the exchange on the 14th. So tracking error, you will have to see some more, data, some more longer horizon, and then only one will be able to find out the tracking error. Of course, in this product, there will be some tracking error, because as I said कि जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज है, जब हम इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, दो सिक्योरिटीज आर एक्चुअली नॉट ट्रेडिंग. सो वी आर प्योरली ट्रेडिंग एज पर द expected price of the market opening in the US, right? And the actual prices will only come forth when the markets will actually open. So there will be some tracking error, because tracking error is calculated as per the performance of the index vis-a-vis the performance of the ETF. But in the long term, you will see that that will sort of normalize, because the that is what I'm trying to say, that we try to give you the best expected price on the exchange by through our market maker, because he's incorporating the last price, the closing price, any futures movement,
and the currency movement also. बट ऑफ कोर्स समटाइम्स वी हैव सीन, जैसे कि हम एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, सिंगापुर में मार्केट्स पहले खुल जाता है, तो वी सी एस जी एक्स निफ्टी एंड वी ट्राई टू प्रिडिक्ट that Indian markets will open in the green or red, right? So similarly, we look at the futures of Nasdaq or the FANG, and then we try to predict or give you a expected price. But in terms of tracking error, the exact tracking error will come out as in when we complete 1 month, 3 months, and so on and so forth. And but yes, as compared to other ETFs where the underlying stocks are getting traded real time, uske comparison mein the tracking error will be more in this product. So someone has asked like what will be the timing? So timing जैसे normal exchange hours होता है, जो market hours होते हैं वही रहेगा. Yes, yes, Be you it can with product, invest. yeah. Yeah. In the ETF, see, ETF is just like any other security, any other stock. So ETF, you can invest anytime during the trading hours. In the fund of fund also, I think the cutoff which is given by each platform has a different cutoff, but normally we have a cutoff of 3 o'clock, 3 p.m. So that is the standard practice for ETF and fund of fund. Karan, can you explain about the exit load for the scheme? Like Yes, there is a exit load of 0.5% for the first 3 months only. okay, So for the first 3 months only, there is an exit load only in the case of fund of fund. There is no exit load in the case of ETF. Of course, in ETF, there is no exit load. One is, free to buy and sell on the exchange. But in the fund of fund, there is an exit load of 0.5% only for 3 months. So anyways, as initially also I had suggested that, so please if invest for the long term. Yeah. okay, so if Karan, if anyone redeem after 3 months, so there will be no exit load for There the. is, yes, yes. After 3 months in the fund of fund as well, there is no exit load. Okay, great. Okay, with that, I think we can conclude this session. We hope you find the new product and got the insight from this NYSE FANG Plus Mire Asset product. So it's available on our both the platforms. You can either invest in ETFs as well as fund of fund. You can start investing in lump sum as well as you can start the SIPs. So we'll keep you posted. If you have any queries, you can send us. We will be answer your queries surely. So with that, we'll end this session. Thank you, Karan, for joining us. Thanks for your valuable time. Thank you. Thank you, Shubham, and thank you everyone for your patient listening. And I hope that all the queries were sort of handled well, and you are able to know more about ETFs and our FANG Plus product as well. Thank you.